Hello friends, welcome back. Students, in this session, now we'll continue our exercise which we are doing, that is exercise 3.2, and in that particular question number 4, this is exercise 3.2 continue. And this is a part of, again, the same instructions, solve the following quadratic equations. And this is very important type of questions because as we saw in this last questions, in main question number second, main question number third, more or less the similar type of questions what we have solved. Now in this fourth also you will look that the same type of question, again there will be a quadratic equation provided to you, but while proceeding you'll find that something additionally we need to uh, have something additionally as compared to the last types of questions. You can notice that. Let me start with first question. Given quadratic equation x square minus 2 plus I x minus 1 minus 7I is equals to 0. This is the given quadratic equation. Now similarly you have to go with the formula method what you have already done in the last questions. So here you can notice a is equals to 1, b is equals to, along with this sign you have to take 2 plus I minus 2 plus I, and c is a constant that is again in this negative they have provided, that is minus 1 minus 7I. साइन को साथ में लेना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम है. Now as you know we have formula method, that means the value for x, solution of this quadratic equation means we have to find the value of x, or you may say roots of the quadratic equation you have to find. So x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac whole upon 2a. Correct students, formula? Now you substitute, therefore x is equals to minus b, that is minus of minus 2 plus I plus or minus b square minus 4ac. Now what is a b? That is minus 2 plus I. This is what completely I have shown in the bracket to make it square, whole square. B square minus 4 into a. A is 1, and into c, that is minus 1 minus 7I. All upon 2 into a, that is 2 into 1. स्टूडेंट्स जरा प्रॉपरली कैलकुलेशन के लिए ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हम बना रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में साइन का किधर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दैट इज मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व without any mistake. So this minus into minus, this becomes plus, and this is just I am going to write 2 plus I plus or minus under root this is माइनस, देखो ये पूरा जो ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर है, सो ये उसके अंदर जो है माइनस भी टर्म है, वो ब्रैकेट भी है खुद, सो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, एंड दैट जस्ट 2 प्लस आई होल स्क्वायर इट विल रिमेन माइनस 4 इंटू 1, दैट इज गोइंग टू बी 4, बट इंटू माइनस है अंदर देखो ब्रैकेट के, तो ये जो माइनस है along with this minus term, this is going to be plus, and that is nothing but I can write 4 into 1 minus 7I. स्लोली एंड स्टडीली ब्रैकेट्स वगैरह जो है वो ओपन हो जाने हैं, क्योंकि
हमें सिंप्लीफाई करते जाना है एंड अपॉन में 2 into 1 दैट इज गोइंग टू बी 2। अब जो है जो रूट के अंदर जो भी है अभी सिंप्लीफाई करना है होल स्क्वायर वगैरह हमको एक्सपांड करके, सो x इज इक्वल्स टू 2 plus I प्लस और माइनस अंडर रूट होल स्क्वायर एक्सपांड करिए 4 प्लस 4i plus I square plus 4 into this 1 minus 7 that is 4 minus 28i whole upon 2. Okay, so x is equals to 2 plus I plus or minus under root. So now this 4 plus 4, this is going to be 8. This plus 4i minus 28i, this is going to become minus 24i, and this I square is going to become minus 1. I square के जगह पे minus 1 and upon 2 as it is. Now as a conclusion in the root, finally I am going to get this is 2 plus I as it is plus or minus under root. This is 8 plus minus 1 है तो ये minus 1 ही मैं गिनूंगा और 8 minus 1 directly I am going to write 7 minus 24i. 7 minus 24i whole upon 2. अब स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है. नाउ I am going to show you the difference as compared to the previous questions, what I said in the last lecture, what we have done. But in those last questions, we are not going to get this situation, what right now I am going to discuss. And you can notice in front of you that very important that in this square root, you got 7 minus 24i, which is actually in this square root, you are getting a form of a plus bi. Yes or no? In this square root, this 7 minus 24i, this is a form of a plus bi. And now you are here going to find its square root. So what does it mean? You have to find square root of a form of a plus bi, that is a complex number, and square root complex number का find करना है. That is only the previous questions what we did कि भाई complex number का square root कैसे ढूंढना है उसको हमें दोबारा यहाँ repeat करना पड़ेगा. So this is very lengthy type of question because right from this step, now I am actually going to consider this as number 1 and I am going to pause here. But what I am going to next, that this square root of 7 minus 24i, I am going to find it separately, and whatever the square root I am going to get, that I'll substitute in this statement number 1 in this place, and then I'll then continue to solve it further. So it is actually a long journey, but slowly and steadily you can complete it, because ultimately this square root find करने वाला जो आपको मालूम है कैसे आपको उसका प्रोसीजर करना है, and that you have to do once again. आपको उसका प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ढूंढने वाले क्वेश्चंस का भी वापस से आपको दोबारा यहाँ पे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग इट्स स्क्वायर रूट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस स्टेप नंबर 1. ये जो हमने यहाँ पे पॉज रखा है इस स्टेप को. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, now finding square root of 7 minus 24i, and to get the square root of this, what we had done, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए हमने क्या अज्यूम करते थे, हम किस तरह से हम प्रोसेस करते थे, ये आपको सबको पता होना चाहिए. एंड दोस सेपरेट क्वेश्चंस फाइंडिंग स्क्वायर रूट, वंस अगेन यू हैव टू रिपीट हियर दैट पार्ट. सो आप चाहे तो उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना. आपको आपके पास क्वेश्चंस उसके हैं तो उसके स्टेप्स को हमने कैसे फॉलो किया है नहीं पता है तो वापस एक बार देख लेना. बाय द वे यहाँ वापस हम लोग रिपीट करते हैं, आपको वापस प्रैक्टिस मिलेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इज इक्वल्स टू, हमने क्या अज्यूम किया था स्टूडेंट्स, x प्लस वाई आई अज्यूम किया था. यस और नो, x प्लस वाई आई अज्यूम किया था, बिकॉज a प्लस बी आई में a और b ऑलरेडी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c वो यूज किया ही है ना. तो अगेन डोंट यूज दैट particular notations. So we just
already we took x plus yi का form, right है? So that is only you consider again, and that is now square root आपको सामने transfer कर देना है. Therefore this becomes 7 minus 24i is equals to x plus yi whole square. Now you have to solve this whole square. 7 minus 24i is equals to x square plus 2xyi plus y square I square. And now 7 minus 24i is equals to x square plus 2xyi plus y square. I square के जगह पे -1. Therefore, 7 minus 24i is equals to x square. This is y square into -1. This is going to be minus y square, and I am keeping it with this x square. Along with that, I am making a bracket. So it is a real term plus 2xyi, where this 2xy is imaginary part. And therefore, by comparing real and imaginary parts, we are going to get x square minus y square is equal to 7, and 2xy is equals to minus 24 is equals to minus 24. यहां से हम y की वैल्यू कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स. y की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस y इज गोइंग टू बी minus 24 अपॉन 2x. 2 से कैंसिल हो जाएगा. Therefore y is equals to minus 12 by x. ये y की वैल्यू, ये इसको हम नंबर 1 करके लेते हैं, इसको इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब मालूम है ना ये प्रोसेस? स्क्वायर रूट फाइंड करने वाली मेथड की बात पूरी यहाँ रिपीट हो रही है. अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस. सो पुट y is equals to minus 12 by x in equation number 1. So now we are going to get that x square as it is minus, instead of y, minus 12 upon x whole square as it is equals to 7. Therefore x square minus, ये माइनस टर्म का स्क्वायर करना है. दिस इज गोइंग टू बी 144 प्लस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. Therefore अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें. ओके, so this is going to be x raised to 4 minus 144 upon x square is equals to 7. Therefore ये x square को सामने ले लीजिए. So it is becoming x raised to 4 minus 144 is equals to 7x square. Arrange it in at one place, one left hand side. X raised to 4 minus 7x square minus 144 is equals to 0. अब हम एक कंसिडर करेंगे. अब क्या लिखते थे? कंसिडर. ये x स्क्वायर के जगह पे आप k अज्यूम करें. ओके, assume it k, and therefore this become k square minus 7k minus 144 is equals to 0. Now it becomes in the quadratic equation के फॉर्म में आ गया. आपको k का वैल्यू ढूंढना है और 144 का ऐसा फैक्टर करो जिससे कि हमें मिलना चाहिए माइनस करने से 7. हाउ टू गेट इट फैक्टराइज्ड? तो 2 से कंसीडर करो पहले. ग्रेट, हो गया. अब इसका फैक्टर इस तरह से आपको दो पार्ट में ये करना है कन्वर्ट, कि जिससे कि माइनस करने पे 7 आना चाहिए. सो दिस गोइंग टू बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है ना, जो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 16, और ये आता है 9. 16 9 144, एंड 16 और 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है कि नहीं आता है? 16 minus 7 we are going to get 7. नाउ साइन को आपको सेटल करना है. स्टूडेंट्स ये भी देखो, स्कूल लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने बराबर से स्टडी किया तो आपको फैक्टर करने में कोई चिंता नहीं होगी. बट इफ समबडी
has some problem, then let this shortcut method will help them. लेट मी शो दिस। जब भी ये शॉर्टकट कभी होता है यूज, जब भी के स्क्वायर जैसे कोई भी इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म हो रहा है के स्क्वायर का, उसमें कोएफिशिएंट इधर 1 हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस शॉर्टकट मेथड। सो ये दोनों साइड दोनों ब्रैकेट में आप के लिख देने का, because that is our variable right now. The factors we have considered that 16 9 are 16 and 9. Now middle term है जो ना, middle term 7 की है, उसमें साइन क्या है उसकी, okay minus, so minus you keep here. Now you required minus in this result, मतलब resulting sign आपको minus चाहिए, so ये minus के साथ along this minus here, यहाँ पे आप ये जगह पे क्या साइन रखोगे कि माइनस मिले मुझे, so you must keep it plus so that you can get final sign as a minus. So this is what you got this particular factor, and now therefore k value k minus 16 is equals to 0 or k plus 9 is equals to 0. Therefore, k is equals to 16 or k is equals to minus 9. This is the two answers you got. But finally, when you are substituting again that value, means consider आपने जो किया था ना x square की जगह पे k. So once again that k को आप x square को replace करो. So replacing x square is equals to k, that means k की जगह पे x square is equals to 16 और x square is equals to minus 9. अब जबकि ये आपको मिला है ये, या डायरेक्टली यहाँ पे आप उसको इग्नोर करके करने के हिसाब से लिख सकते हैं, सिंस जो x है that is belonging to the real number, but here we are not getting it as a real number, and therefore x square is equals to minus 9 is rejected. ठीक है, okay, only you are going to get this x square is equal to 16, therefore x is equals to, finally you are getting plus or minus 4, square root of 16, therefore x is equals to plus or minus 4. This is what the answer you got instead of x, main variable जो हमारा original variable था. अब x का दो आंसर मिला है, सो दोनों आंसर आपको आपके लिए कंसीडर आपको करने हैं x के लिए, तब जाके ये जो ऊपर हमने द इक्वेशन y के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लेना है, जिसको हम लोग नंबर 2 कंसीडर कर देते हैं. तो y इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन x, उसमें आपको रखना है. सो when y is equals to, oh sorry, when x is equals to plus 4, y is going to be minus 12 upon जो है ना x, in that minus 12 upon 4, that is minus 3. okay, therefore ये आपको एक आंसर मिल गया. when x is equals to minus 4, y is going to be minus 12 upon x, therefore y is equals to minus 12 upon minus 4, minus minus cancel, and 4 3s are 12, that is y is equals to 3. This way you got y is equals to 3, another answer. और इसके आधार पे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट. तो फर्स्ट केस व्हेन x इज इक्वल्स टू, पहला केस व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3, है ना. तो हमारा स्क्वायर रूट हमने जो फाइंड करना का था वो क्या था, दैट इज दिस वन. This is what the square root is required. This is considered as x plus yi. So x plus yi जो है हमारा required square root है. This is going to be 4 plus
minus 3i, that is nothing but 4 minus 3i. And second case, when x is equals to minus 4 and y is equals to plus 3, therefore x plus yi is going to be minus 4 plus 3i. ओके, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन आने से क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i. So this is 4 plus 3 sorry 4 minus 3i प्लस में है ये. If I do the bracket, तो बाहर है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ ये ब्रैकेट के बाहर माइनस में है. एंड देयरफॉर we can say the square root of, किसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे थे, 7 minus 24i is going to be 4 minus 3i प्लस और माइनस. अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के पूरे प्रोसेस में कहाँ ना कहाँ आप थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं ना, दैट इज एडवाइजेबल, बिकॉज दिस मेन क्वेश्चन इज फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टर करके लेना है हमको. मेन क्वेश्चन जो है उसका है, मगर जो आपका जो लेंथ बढ़ रहा है ये जो स्क्वायर रूट की प्रोसीजर करने से आपका पूरा जो लेंथ है ना सॉल्यूशन का वो बढ़ता है. तो इफ यू हैव सम ग्रिप, प्रॉपर ग्रिप टू गेट द स्क्वायर रूट little bit faster, means you can avoid some steps in between. If you can do it fastly, then it will be more appropriate for you to finish it in a little bit minimum steps, little bit less number of steps, I mean to say. तो थोड़ा बहुत आप reduce कर सकते हैं आपके solution को, that way I am saying. But if you have some kind of ऐसा बोलते हैं ना कि डायरेक्ट कर रहे हैं मिस्टेक हो जाती है, तो नहीं करो. बेटर यू गो विद दिस प्रॉपर मेथड, पूरा स्टेप बाय स्टेप जाके फिर उसको आप सॉल्व करके लीजिए एंड देन यू फाइंड आउट. सो आंसर मस्ट बी करेक्ट. इसका आपको घाई करके आंसर में मिस्टेक नहीं लाना है हमको नहीं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट गलत हो जाएगा तो आगे हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ना. तो ये जो हमको मिल गया इसको हम नंबर क्या दे देंगे, ऑलरेडी हमने इसको नंबर ओके इसको नंबर 1 दे दिया था ना. देन दैट दिस क्वाड्रेटिक में जो इसको नंबर 2 दे दीजिए और इसको नंबर 3 दे दीजिए. एंड हियर यू मेंशन दैट इफ यू हैव रिटर्न from 3. And now what you need to do, that फर्स्ट स्टेटमेंट, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें कि स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बाकी है, देखो ये स्टेटमेंट की बात चल रही है. इसमें स्क्वायर रूट मिल गया अभी आपको, स्क्वायर रूट वाला पूरा आंसर हमने अलग से ढूंढ के ले लिया है. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन 1. इसको नेक्स्ट नंबर आप देना है तो दे दो 4. सो पुट 4 in 1. Put 4 in 1. So therefore your x value, still you are continuing with this x. x क्या था आपका, देख लो, x is equals to 2 plus I plus or minus, ये प्लस और माइनस ही मिला है ना हमको, 2 plus I plus or minus 4 minus 3I whole upon 2, it was that 2. So हमने ये आप देख लो x का आपने वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर लिया है अभी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जब तक नहीं मिल रहा था तब तक ये अधूरा था. ये स्क्वायर रूट हमने ढूंढा इतना प्रोसेस करके, एंड नाउ दैट स्क्वायर रूट यू हैव सब्स्टिट्यूटेड इन दैट. सो नाउ you can separate it with both plus or minus. X is equals to 2 plus I plus 4 minus 3I अपॉन 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग से आप, और x is equals to this is 2 plus I minus 4 minus 3I whole upon 2. So this will be x is equals to 2 plus I
plus 4 minus 3i upon 2, or x is equals to 2 plus I minus 4 minus 3i upon 2. Therefore, x is equals to 2 plus 4, this is 6, plus I minus 3i, this is minus 2i upon 2, or x is equals to, this is 2 minus 4 minus 2, plus I minus 3i minus 2i upon 2, जहां से आप कॉमन ले लीजिए, हाँ ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा ना, वन थिंग यू नोटिस हियर, दिस इज गोइंग टू बी, ये चेंज हो जाएगा साइन, बिकॉज बाहर माइनस, तो दिस आई प्लस 3i, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 4i, एंड देयरफॉर नाउ न्यूमरेटर में आप 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, 3 माइनस आई अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 को कॉमन ले लीजिए, -1 plus 2i. I have just taken plus 2 common, so that in both this 2 will be going to cancel. So finally x will be 3 minus I, or x is equals to -1 plus 2i. So this is what the value of x finally you got. Students, क्वेश्चन में एज सच डिफिकल्ट कुछ नहीं है, खाली इसका लेंथ ज्यादा हुआ है और जो है स्टेप्स ज्यादा होने से थोड़ा अपने को ध्यान रखने वाली बात है, वो इम्पोर्टेंटली आपको करने समय, जैसे भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके आप उस समय आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, पेशेंस होना चाहिए आपको, मतलब घाई नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक कहाँ नहीं हो जाना चाहिए। सो दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ, दिस इज फोर्थ वन, इसमें जो हम लोग को जो चारों चार क्वेश्चंस करने हैं, दिस वी हैव टू सॉल्व इन दिस मैनर। चलिए स्टूडेंट्स, विद दैट मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर minus 3 root 2 plus 2i into x plus 6 root 2i, i बाहर है, i स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, is equals to 0. So same way we will begin here. A is a 1, b value is minus 3 root 2 plus 2i, और c की वैल्यू जो है वो 6 root 2i. So this is what we got. Now let us substitute in the formula method, which is x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac whole upon 2a, whole upon 2a, and सब्सटीट्यूट करो इसमें, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ दिस minus 3 root 2 plus 2i plus or minus under root b square, that is minus 3 root 2 plus 2i whole square minus 4 into a, that is 1, and into c, that is 6 root 2i whole upon 2 into 1. ठीक है, so x is equals to, ये माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, so this is only 3 root 2 plus 2i plus or minus अंडर रूट, ये भी देखो स्क्वायर पूरे माइनस टर्म के लिए भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 root 2 plus 2i whole square minus 4 into 1 into 6, that is 24 root 2i, okay, whole upon
2 into 1, that is 2. So in the next step, this is 3 root 2 plus 2i plus or minus अंडर रूट, ये होल स्क्वायर एक्सपांड करना पड़ेगा. तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला 9 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू ए बी, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 root 2i plus b square, that is 2i whole square, that is 4i square, minus 24 root 2i whole upon 2. So x is equals to 3 root 2 plus 2i plus or minus under root. This is 9 into 2, 18 plus, now see, this is 12 root 2i, this is minus 24 root 2i. दोनों like term है, like term means same type के terms है, so they can be solved. So plus 12 root 2i minus 24 root 2i, this is going to be minus 12 root 2i. Got this point? ये दोनों को like term के हिसाब से सिंप्लीफाई होने मिलता है. एंड प्लस 4i स्क्वायर के जगह पे 4 इंटू आई स्क्वायर के जगह पे माइनस 1 upon 2. Therefore x is equals to 3 root 2 plus 2i plus or minus. अभी ये रूट में बचेगा क्या स्टूडेंट्स? दिस इज 4 इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस 4, माइनस 4 प्लस 18, दिस इज प्लस 14 माइनस 12 रूट 2i अपॉन 2, इतना बच गया. अब हमारा मेन इंटेंशन, अब ये जो है स्क्वायर रूट है जो उसको ढूंढना है. जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा तब तक आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज यू नीड टू कंसिडर एज स्टेटमेंट नंबर 1, statement number 1, and keep it like this right now till you can find further the square root of this. Now square root of 14 minus 12 root 2i. so चलिए आप आइए उस प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ढूंढने वाले क्वेश्चन में, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 14 minus 12 root 2i is equals to x plus yi, and therefore this is square root. If you transform the right hand side, this becomes square. So 14 minus 12 root 2i is equals to x plus yi whole square. Therefore 14 minus 12 root 2i is equal to whole square, expand करिए, x square plus 2xyi plus y square I square. Therefore 14 minus 12 root 2i is equal to x square plus 2xyi plus y square into minus 1, y square के जगह पे minus 1, and therefore 14 minus 12 root 2i is equals to x square. This is y square into minus 1, that is minus y square. In the real part I am writing together with x square plus 2xyi, that is imaginary part. Now by comparing real and imaginary parts, we get, that is x square minus y square is equals to 14. This is your statement number 2. And 2xy is equals to minus 12 root 2. Therefore y is equals to minus 12 root 2 upon 2x, where 2 is going to be cancelled with this. So y is equals to minus 6 root 2 upon x. This is number 3rd. And put y is equals to minus 6 root 2 upon x in number 2nd. Therefore x square minus y के जगह पे minus 6 root 2 upon x whole square is equals to 14. Therefore x square
माइनस, ये माइनस का होल स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, so this is going to be 36 and स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर मतलब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू 4 माइनस 36 इंटू 2 72 upon x square is equals to 14. Therefore, x raised to 4 minus 72 is equals to 14x square. Therefore, x raised to 4 minus 14x square minus 72 is equals to 0. Now, you do have consideration. Consider x square is equals to k, and therefore this reducible quadratic equation will become k square minus 14k minus 72 equals to 0. Now this is a perfect quadratic equation के फॉर्म में आ गया है, जिसका फैक्टर आपको लेना पड़ेगा, which is actually 72 का फैक्टर करेंगे. So माइनस करने पे 14 मिलना चाहिए. Suppose if I take this 3 into 3 into 2, this is 12. तो माइनस करने पे 14 मिल रहा है, नहीं, this is not possible, this is because this is 4, 12 minus 4 is not going to be minus 14, 14 नहीं मिलेगा. So what else we can have combinations? So we can take 3 into 3 into 22, even though it will be not possible. Even if we take 2 into 2 into 2 into 3, no. Again, if we take 3 into 2 into 2, which is again still not possible. Okay, any other combination is left? Yes, 3 into 3 into 2, 3 is a 9, 9 to the 18, and 2 into 2, 4, and 18 minus 4 is going to be 14. Got this? So now we can prepare factors. K in both the brackets, factor is 18. Forza, middle term has sign minus, we require minus, along with this I can keep plus, so it becomes finally minus. So this is the factors. So K minus 18 is equals to 0, or K plus 4 equals to 0. Therefore K is equals to 18, or K is equals to minus 4. Now we substitute that K value, that is x square is equals to 18, or x square is equals to minus 4. Here x not belonging to real number, therefore x square is equals to minus 4 is not possible, therefore that is to be rejected, and therefore x is equals to plus or minus root 18, plus or minus root 18, and that plus or minus root 18 we can further consider as x is equals to plus or minus 9 2 जा, जिसमें कि 9 का perfect square निकल जाएगा, that is 3 and root 2 as it is. So plus or minus 3 root 2 we got as a value for x. Now when x is equals to 3 root 2, y is equals to, हमारे पास y का equation ready है, that is from third, that is minus 6 root 2 upon x, minus 6 root 2 upon x.
Therefore, minus 6 root 2 upon 3 root 2. Root 2 cancel. 3 2s are. Therefore, this is minus 2. When x is equals to minus 3 root 2, therefore y is equals to minus 6 root 2 upon x, which is going to be minus 6 root 2 upon minus 3 root 2. Root 2 cancel. Minus minus cancel. 3 2s are. So this is going to be minus plus 2. So both x and y we got. So now required square root of, हम किसका square root ढूंढ रहे थे students? That we were finding square root of this 14 minus this one 12 root 2i. 14 minus 12 root 2i. 14 minus 12 root 2i. इसका पूरे का square root is, okay, first when x is equals to 3 root 2 and y is equals to minus 2. So x plus yi जो square root है वो हमने assume किया गया था x plus yi, and that is going to become 3 root 2 plus minus 2i, which is going to be 3 root 2 minus 2i. And secondly, when x is equals to minus 3 root 2 and y is equals to plus 2, in this case x plus yi will become minus 3 root 2 plus 2i. That is, if we take minus common, this is going to be 3 root 2 minus 2i. So with this, you can compare this previous one is in a plus and this is next one is in minus. So we can combine both this answer. Hence, square root 14 minus 12 root 2i equals to plus or minus 3 root 2 minus 2i. So this is the answer of square root just we got. Now rejoin that step from this is, if you want you can conclude that number 4. This is number 4, and this 4 if you substitute in number 1, which is still pending, our x value we have to find. तो x का वैल्यू अभी भी यहाँ तक यहाँ लेके आके हमने छोड़ा था ना, जो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट स्क्वायर रूट की वैल्यू करके हमको इसको कंप्लीट करना है. सो फ्रॉम 1 and 4, from 1 and 4, x equals to, what will be the value of x? Root 3 root 2 plus 2i. Okay, 3 root 2 प्लस 2i, प्लस और माइनस इसका जो स्क्वायर रूट जो आएगा वो प्लस और माइनस में आया है मेरे पास. स्क्वायर रूट क्या आया है पूरा इसका? So plus or minus 3 root 2 minus 2i whole upon 2 whole upon 2. So therefore x is equal to, अभी हम लोग प्लस और माइनस को दोनों में अलग अलग लिखेंगे. 3 root 2 plus 2i plus 3 root 2 minus 2i upon 2, or x is equals to
3√2 प्लस 2i। अब ये जो माइनस वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 3√2 प्लस 2i होल अपॉन 2। सो x is equals to 3√2 plus 3√2, 6√2, and this plus 2i minus 2i is going to be cancelled upon 2, or x is equals to 3√2, 3√2 minus 3√2 cancel, 2i plus 2i, this is going to be 4i upon 2। ये आपको आंसर मिला है, और अपॉन में जो 2 है उसको कैंसिल करने मिलता है, 3 is square 2 जा, therefore x value is equals to 3√2, or x is equals to 2i, which is the final answer of x। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन मच लेंदी है देन द अदर देन दैट प्रीवियस क्वेश्चंस जो है ना, कंपैरेटिवली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे ही है, लेकिन ये जो है ना स्क्वायर रूट ढूंढने का जो पॉइंट additionally you have to consider and you have to find the square root separately. This is a big deal, which in between you have to solve that square root, and then that square root you have to resubstitute and do that step and get it back that value of x. So altogether if you look, question is lengthy but easy. It's not much difficult to understand. It is not that much tricky, but number of steps as well as the process, if you notice, it is much lengthier. So have proper patience while doing this and carry this calculations very systematically so as not to have any mistake, because ultimately in between any at any step if you are missing something, miss out हो जाता है, कुछ भी mistake हो जाता है, then it is too much uh, difficult to find out where you got the mistake, and finally you are going to get a wrong conclusion. So with that, have proper practice. The remaining questions also you can do it, but I'll be going to take in the next lecture. You can try it by your own and you can also complete this. So next lecture हम मिलते हैं and we'll continue. Thank you friends.